हाय फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश। प्लीज़ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा और ये भी पता चल जाएगा कि इंग्लिश का यूज कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक की ओर। माय टॉपिक इज इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश। चलिए सबसे पहले आते हैं इंग्लिश का यूज कहाँ कहाँ होता है। इंट्रो में, यानी कि इंग्लिश हम जानते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो आते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरे विश्व में बोले जाते हैं। सो इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसीलिए इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहे जाते हैं। इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ये ग्लोबल लैंग्वेज हुआ और ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ। विदाउट इंग्लिश इट इज वेरी टफ टू गेट सक्सेस और गो अहेड। और गो अहेड। इट इज यूज इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। ये इजी वर्ड है, आपको अपने से समझ में आ जाएगा, इसीलिए आप लिखाते जाते हैं सिर्फ। इट डेवलप्स आवर पर्सनालिटी एंड डेकोरेट्स आवर करियर। It is used in so many fields like an education field. Number 2, social field. Number 3, economics field. Number 4, entertainment field. And number 5, political field. चलिए तो सबसे आते हैं, यानी कि एजुकेशन फील्ड में इंग्लिश का यूज कहाँ कहाँ होता है। चलिए सब डिटेल में आते हैं, इनका डिटेल में बताते हैं। क्या है एजुकेशन फील्ड? सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। Which gives us wisdom, career, guideline, discipline and job opportunity. क्या एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग विच गिव्स अस गुड वे, विजडम, कैरियर, गाइडलाइन, डिसिप्लिन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। Without education, a man is like an animal. But nowadays, for getting good education, English plays very important role. आप लोग भी नोट करते जाइएगा। इट्स ओके। So there is a big relation between English and education life.
इंग्लिश और एजुकेशन में बहुत बड़ा रिलेशन है। चलिए आते हैं, यदि हम एजुकेशन फील्ड में किस किस फील्ड में इंग्लिश का यूज होते हैं, जैसे कि गुड बुक, गुड इंस्टीट्यूट, कंपटीशन, लाइक। चलिए जानते हैं गुड बुक्स। एज वी नो, good books play very important role to get good education। जैसा कि हम जानते हैं गुड बुक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं अच्छी शिक्षा लेने में। सेंटेंस बहुत इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए लिखते जाइए आप लोग। विदाउट रीडिंग गुड बुक we can't get success। But most of the books are available in market in English language। Because most of the writers write their books in English language। किसमें लिखते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में। सो इफ वी डोंट नो इंग्लिश वी कांट रीड गुड बुक्स। यदि हम इंग्लिश नहीं आएंगे तो वो अच्छी किताब नहीं पढ़ सकते। यानी कि एज वी नो गुड बुक प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट गुड एजुकेशन। विदाउट रीडिंग गुड बुक वी कांट गेट सक्सेस। The most of the books are available in market in English language because most of the writer write their book in English language। So if you don't know English, we can't read good books। चलिए अब आते हैं गुड इंस्टीट्यूशन। यानी गुड इंस्टीट्यूशन क्या रोल निभाते हैं अच्छी शिक्षा लेने में। चलिए तो आते हैं। जस्ट एज वी नो good institution plays very important role to get good education। But most of the teachers and professors teach their students in English language। teach their students in English language and lots of students talk in English language। So if you don't know English we can't talk an admission in we can't take an admission in good institution। क्या हो, जैसा कि हम जानते हैं गुड इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं अच्छी शिक्षा लेने में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स और प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करते हैं। इसलिए यदि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो अच्छी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकते। चलिए बात है कंपटीशन। एज वी नो दिस इज द एज ऑफ कंपटीशन। As we know, this is the age of competition in which you
every student prepare for different competition. Prepare for different competition. Like banking, medical, engineering, etc. बहुत सारे एग्जाम हैं. But it is fact that in lots of exam, questions are asked in English language. And most of the exam, English has become qualifying paper. English language. And most of the exam, English has become qualifying paper. So if you don't know English, we can't qualify the competition. We can't qualify the competition. जैसा कि हम जानते हैं, यानी ये एज है क्या, कंपटीशन की एज है. यानी हर स्टूडेंट यानी अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग. और एक तथ्य है क्या, यानी मोस्ट ऑफ द एग्जाम किसमें पता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं. और इंग्लिश होने के कारण क्वेश्चन क्या होता है, ईजी हो जाते हैं. यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आते, इंग्लिश में समझ में आते हैं. इसीलिए इंग्लिश नहीं आएंगे तो हम कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. अब आता है इंटरव्यू. इंटरव्यू में इंग्लिश का क्या क्या यूज है, चले आते हैं. एज वी नो, everyone had desired to get a good job in a big company. And for getting a job in a big company, interview is necessary. यदि हम बड़ा कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं तो इंटरव्यू नेसेसरी होते हैं, जरूरत पड़ेंगे वहां पे. It is fact that for facing interview, English plays very important role. So, if we don't know English, we can't get a job in a big company. Job in a big company. As we know, everyone desires to get a job in a big company. For getting a job in a big company, interview is necessary, and it is a fact that for facing interview, English plays very important. Also, if you don't know English, we can't get a job in a big company. इजी लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कंप्यूटर. इंग्लिश का यूज कंप्यूटर में कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, चलिए आते हैं. एज वी नो, दिस इज द IT वर्ड. In which computer plays very important role. Without knowledge of computer, a man gets handicapped. But it is fact that for operating the computer,
English plays very important role. So if you don't know English, we can't operate the computer. We can't operate the computer. सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो क्या होगा, कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. जैसे कि एज वी नो दिस इज आईटी वर्ड इन विच कंप्यूटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट और विदाउट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मैन गेट हैंडिकैप्ड बट इट इज fact that for operating the computer English plays very important role. So if you don't know English we can't operate the computer. सिंपल सा लैंग्वेज है, आपको समझ में आ गया होगा. चलिए बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर. ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. सही इन्फॉर्मेशन क्या है? तथ्य. क्या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन? एज वी नो दिस इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. In which everyone wants to get information. There are so many ways to get information. But for getting authentic information, English plays very important role. English plays very important role. So if we don't know English, we can't get authentic information. यदि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं पा पाएंगे. क्या है? एज वी नो दिस इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन विच every student wants to get information. There are so many ways to getting information, but authentic information English plays very important role. So if you don't know English we can't get authentic information. अब हमारा टॉपिक है क्या? सोशल फील्ड. सेकेंड टॉपिक. सोशल फील्ड में भी 2 पॉइंट पढ़ना है. चलिए आते हैं कैसे कौन कौन सा पढ़ना है. नंबर फर्स्ट क्या है? टू इंक्रीज सोशल स्टेटस. यानी समाज में अपना स्टेटस कैसे बढ़ाएं. सिंपल. टू इंक्रीज आवर सोशल स्टेटस. एज वी नो we live in society. As we know we live in society in which everyone want to get society. हर कोई समाज में रहना चाहते हैं. There are so many ways to get social status. There are so many ways to get social status. Like a car, bungalow, foreign tour, degrees, foreign tour, degree. But what is the best way to increase social status? No doubt English is the best way. कहते हैं English is the best way. If we speak English we can increase our social status. If we speak English we can increase our social status. इसमें कहने का मतलब था क्या? आप अपने समाज में सोशल स्टेटस कैसे इंक्रीज करें, क्या क्या होना चाहिए.
सोशल स्टेटस इंक्रीज करने के लाइक कि आज आपके पास कार होना चाहिए, बेंगलुरु होना चाहिए, कभी कभी आप घूमने जा रहे हैं कहीं दूसरे विदेश, डिग्री होना चाहिए, ये सब होगा आप अपने समाज सोशल स्टेटस इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं तो आप इंग्लिश बोलिए, उससे भी इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, यानी टू रिमूव कम्युनिकेशन गैप, यानी कि हम अपना कम्युनिकेशन गैप कैसे रिमूव कर सकें। जानते हैं इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, सो दिक्कत तो होती है। चलिए शेयर करते हैं। एज वी नो, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, वास्ट यानी बिग कंट्री, where so many languages are spoken like हिंदी, उर्दू, भोजपुरी etc. बहुत सारे लैंग्वेज है। बट इट इज पॉसिबल टू लर्न ऑल दीज लैंग्वेजेज, क्या यह पॉसिबल है सभी लैंग्वेज को याद करने के लिए? नहीं पॉसिबल है, नो डाउट। इट इज नॉट पॉसिबल। देन हाउ कैन वी रिमूव आवर कम्युनिकेशन गैप? अपना कम्युनिकेशन गैप कैसे दूर कर सकते हैं? नो डाउट इंग्लिश इज द बेस्ट वे। So, if we speak English, we can communicate with the people of India or abroad. सिंपल सी लैंग्वेज है कि यदि हम इंग्लिश जानते हैं तो अपना कम्युनिकेशन गैप भी दूर कर सकते हैं और अलग अलग देश जाकर बात भी कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया जो वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, ये सब बहुत सारे सभी लैंग्वेज को समझना मुश्किल होती है। यदि आप एक कॉमन वर्ड इंग्लिश आता है तो आप अपना कम्युनिकेशन गैप रिमूव कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक्स फील्ड। इकोनॉमिक्स फील्ड का सबसे पहले इंट्रो में आते हैं। एज वी नो, money plays very important role to get successful life. As we know, money plays very important role to get successful life. Without money, we can't get success or go ahead. There are so many ways of earning money. Like बहुत सारे तरीका है पैसा कमाने की, जैसे कि प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस भी है etc. बिजनेस etc. But nowadays, for earning money, आजकल पैसे कमाने के लिए इंग्लिश प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंग्लिश बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। सो देयर इज ए बिग रिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड मनी लाइफ। यदि आपको इंग्लिश नहीं आते हैं तो क्या होगा, आपको जॉब नहीं मिलेंगे, यानी इंटरव्यू आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। और यानी कि इंग्लिश नहीं आते हैं तो बड़े बड़े कंपनी में आप अपना बिजनेस डील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी में बिजनेस डील करने के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी होते हैं। चले आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी। क्या है जॉब अपॉर्चुनिटी?
As we know, this is the materialistic life. जैसा कि हम जानते हैं ये पैसों की लाइफ दुनिया है, इन विच मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. There are so many ways of earning money. There are so many ways of earning money. Doing job is one of them. पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप जॉब करते हैं सबसे अच्छा तरीका है. It is fact that for doing a job in a big company, English plays very important role. यदि आप बड़ा कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं. So if we don't know English, we can't get a job in a domestic or multinational company. यानी अब यदि आप इंग्लिश नहीं आते हैं, यदि आपको इंग्लिश नहीं आते हैं तो क्या होगा, बड़े बड़े कंपनी में जॉब नहीं ले पाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी और विथ हैंडसम सैलरी. बड़े बड़े कंपनी में जॉब नहीं ले पाएगा और वो क्या, अच्छा सैलरी के साथ. As we know, this is the materialistic life in which money play very important role. There are so many ways to earning money. Doing job is one of them. But it is fact that for doing a job in a big company, English plays very important role. So if we don't know English, we can't get a job in a domestic or multinational company with handsome salary. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी बिजनेस क्या है. चलिए बिजनेस को भी थोड़ा सा जान लेते हैं. एज वी नो, दिस इज द लग्जरियस लाइफ. लग्जरियस मतलब क्या होता है, शानदार. इन विच मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. As we know, this is the luxurious life in which money plays very important role. There are so many ways to earning money. Business is one of them. But it is clear that for dealing the business in a big company, English plays very important role. आगे ने, यानी यदि आप बड़ा कंपनी में बिजनेस डील करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपको जरूर आना चाहिए, तभी आप डील कर सकते हैं. सो इफ यू डोंट नो इंग्लिश, वी कांट डील आवर बिजनेस इन ए बिग कंपनी. यदि आपको इंग्लिश नहीं आते हैं तो अपना बिजनेस बड़े कंपनी के साथ डील नहीं कर सकते. चलिए एक बार पूरा पढ़ देता हूँ. एज वी नो, दिस इज द लग्जरियस लाइफ इन विच मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. There are so many ways to earning money. Business is one of them, but it is clear that for dealing the business in a big company, English plays very important role. So if we don't know English, we can't deal our business in a big company. चलिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रैक्टिस है. यानी किसी भी कोई भी काम करने के लिए प्रैक्टिस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट निभाते हैं. हम कोई भी काम वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत मायने रखते हैं. चले आते हैं प्रैक्टिस. एज वी नो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. यानी प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाते हैं. विदाउट प्रैक्टिस वी कांट गेट सक्सेस और गो अहेड. यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सक्सेस नहीं हो पाएगा और आगे नहीं बढ़ पाइएगा. बट इफ यू डू, यदि आप मेडिकल, लॉ और टीचिंग करना चाहते हैं, प्रैक्टिस
इंग्लिश प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंग्लिश बहुत बड़ा निभाते हैं, यानी कि भूमिका निभाते हैं मेडिकल, लॉ और टीचिंग यानी प्रैक्टिस करने में। सो इफ यू डोंट नो इंग्लिश वी कांट डू दिस प्रैक्टिस। यदि आपको इंग्लिश नहीं आते हैं तो ये सब प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। यदि आप डॉक्टर बनते हैं तो मैं क्या क्या होते हैं सब मेडिसिन में सब नाम क्या इंग्लिश में ही लिखा हुआ होते हैं। लॉ बनते हैं, वकील बनते हैं, वहाँ पर भी इंग्लिश में ही बात करना पड़ते हैं। टीचिंग यानी आप पढ़ाते जाते हैं, पढ़ाइएगा, उसमें भी इंग्लिश बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट निभाते हैं। जब आप पढ़े तो आज भी नो जिला बात है नेक्स्ट टॉपिक में क्या एंटरटेनमेंट फील्ड। एंटरटेनमेंट फील्ड यानी मनोरंजन की क्षेत्र में इंग्लिश क्या निभाते हैं। चलिए इसका भूमिका जानते हैं। इंट्रो, एज वी नो people are very much they busy in their work। आजकल पीपल अपने काम में बहुत सारे बिजी रहते हैं। दे फील मोनोटोनस लाइफ, वो क्या करते हैं मोनोटोनस लाइफ फील करते हैं, यानी कि बोर फीलिंग करते हैं। इन दिस केस हाउ विल दे एंटरटेन देमसेल्फ। इन दिस केस हाउ विल दे एंटरटेनमेंट देमसेल्फ। इस केस में वो अपने आप से एंटरटेनमेंट कैसे कर सकते हैं। There are so many ways of getting entertainment. There are so many ways of getting entertainment, like music, movies, sports, etc. But nowadays, for getting entertainment, English plays very important role. English plays very important role. So there is a big relation between English and entertainment life. So there is a big relation between English and entertainment life. यदि आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपको आना चाहिए। यानी देखिए आप सिंपल सी स्मार्टफोन यूज करते हैं, यदि इंग्लिश नहीं आते हैं तो वहाँ गेम भी खेलिएगा, इंग्लिश में बात करना पड़ता है, नहीं खेल पाएगा बड़ा अच्छा गेम। मैच देखते हैं, यानी मैच में भी इंग्लिश में यानी कमेंट आते हैं, कमेंट्री। चलिए बताते हैं वो सब भी। एंटरटेनमेंट का पहला टॉपिक क्या है, म्यूजिक एंड मूवी। इसमें भी दो टॉपिक्स पढ़ना है। चलिए आते हैं म्यूजिक एंड मूवी में। म्यूजिक एंड मूवी, यूथ आर वेरी क्रेजी अबाउट म्यूजिक एंड मूवी। क्रेजी मतलब उत्सुक होते हैं, यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा है उसी। यानी यूथ आर वेरी क्रेजी अबाउट म्यूजिक एंड मूवी, particularly western music and Hollywood movies are dominating overall. Particularly western music and Hollywood movies are dominating overall. But it is fact that for listening to western music and watching Hollywood movies, Western music and watching Hollywood movie, English plays very important role. English plays very important role. So if you don't know English, we can't entertainment ourselves. देखिए यदि आपको इंग्लिश नहीं आते हैं क्या होगा,
आप हॉलीवुड मूवी नहीं देख सकते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें सब इंग्लिश में ही बोलते हैं। इट्स ओके। चलिए अपना आते हैं सेकेंड पॉइंट में, क्या स्पोर्ट्स। एज वी नो sport have become the part of India culture. As we know, sport have become the part of India culture, particularly cricket matches dominating overall. But it is a big tragedy that all the fascinating commentary are happened in English language. So if you don't know English, we can't entertainment ourselves. यदि आपको इंग्लिश नहीं आते हैं तो क्या होगा, आप क्रिकेट नहीं समझ पाएगा। क्रिकेट में यानी कमेंट्री जो बोलते हैं क्या होता है, इंग्लिश में ही होते हैं, इसीलिए आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एज वी नो स्पोर्ट हैव बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया कल्चर, particularly cricket match is dominating overall, but it is a big tragedy that all the fascinating commentaries are happening in English language. So if we don't know English, we can't entertain ourselves. अब चलिए अपना टॉपिक क्या अंतिम बच गया, क्या पॉलिटिकल फील्ड। इसमें भी 2-3 पॉइंट पढ़ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो जल्दी करता हूँ। पॉलिटिकल फील्ड इंट्रो में आते हैं। पॉलिटिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। पॉलिटिक्स क्या है, ये रूल और रेगुलेशन को कलेक्ट करते हैं। विदाउट पॉलिटिक्स वी कांट रन आवर कंट्री। बट फॉर बीइंग एन एक्टिव मेंबर ऑफ पॉलिटिक्स, English plays very important role. So there is a big relation between English and politics. Like पॉलिटिक्स क्या है, ये रूल एंड रेगुलेशन को कलेक्ट करते हैं। और यदि आपको पॉलिटिक्स नहीं आते हैं यानी अलग अलग जगह पर नहीं घूम पाइएगा। और यदि आप चाहते हैं आज अच्छा पॉलिटिक्स यानी नेता बनने के लिए, तो आपको पॉलिटिक्स क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलना आपको जरूर होना चाहिए। यदि आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आप अपने पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर पाइएगा। चले आते हैं क्यू पोस्ट। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आजकल तो नेता डेमोक्रेटिक का मीनिंग हम चेंज कर दिए। एज वी नो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर एवरी मिनिस्ट्री wants to get higher post, like as finance ministry, foreign ministry, defense ministry, etc. But it is a fact that for getting these posts, English plays very important role. For getting this post, English plays very important role. So if we don't know English, we can't get this higher post. यानी कि यदि आप चाहते हैं अपनी क्या बोलते हैं अपनी पद को ऊपर करने के लिए, जैसे फिनांस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री यदि बनना चाहते हैं, क्या होगा, आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा।
इंग्लिश नहीं बोलेगा तो अलग अलग कंट्री में आप बात नहीं कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपन डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या, डिस्कशन। एज वी नो द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। कोई लोग होता है नेता लोग डिस्कशन करते हैं पॉलिटिक्स के मैटर में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वेयर पॉलिटिक्स मैटर आर डिस्कस्ड। As we know, the parliament is called the strongest pillar of democracy where politics matter discussed. But it is clear that to discuss the politics matter in parliament, English plays very important role. English plays very important role. So if you don't know English, we can't discuss the politics matter in parliament. So if you don't know English, we can't discuss the politics matter in parliament. यदि आपको इंग्लिश नहीं आता तो हम पार्लियामेंट में पॉलिटिक्स मैटर की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है ना। As we know, the parliament is called the strongest pillar of democracy where politics matter discussed, but it is clear that to discuss the politics matter in parliament, English plays very important. So if you don't know English, we can't discuss the politics matter in parliament. अब अंतिम टॉपिक क्या बच गया, बजट। बजट क्या है चल जानते हैं। बजट इज द फाइनेंशियल रिपोर्ट, यानी साल भर में कितना पैसा बचते हैं, यानी मुद्रीकरण होता है ना एक तरह से, हाँ उसे समझ लीजिए। बजट इज द फाइनेंशियल रिपोर्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देयर इज ओनली वन बजट, दैट इज कॉल्ड यूनियन बजट। There is only one budget, that is called union budget. It is presented by finance ministry of our country. बजट को कौन प्रेजेंट करता है, फिनांस मिनिस्ट्री हमारे देश में। ओनली इन ए ईयर, साल में एक बार प्रेजेंट करना पड़ता है बजट को। बट इट इज ए फेक डेट फॉर प्रेजेंटिंग द बजट। Presenting the budget in parliament, English plays very important role. So if you don't know English, we can't present budget in parliament. Budget in parliament. I think budget is the final financial report, income and expenditure. There is only one budget, that is called union budget. It is presented by finance ministry of our country only in a year, but it is fact that for presenting the budget in parliament, English plays very important role. So if you don't know English, we can't present in budget in parliament. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक तो बनते हैं फ्रेंड्स, इतना मेहनत किए हैं जो।